Hello everyone, welcome to Crack Grade B. I am Niharika John Mehra and we are going to do some more questions of Parajumbles in today's session. We have seen अभी तक कि कैसे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं. We have also seen how to deal with these questions. इनके लिए क्या strategy होनी चाहिए, क्या trick होनी चाहिए. अभी आपको उसको और ज़्यादा अप्लाई करते जाना है so that you get really good at it. Okay. Give me a moment. I will first of all I would like to know कि मेरी आवाज़ proper आ रही है कि नहीं, आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं, and then we will begin. Let me share in my group as well. Hmm. Thank you. All okay. Good afternoon. Good afternoon. So I'll start with giving you the questions. Again, timer के साथ में आपको इन questions को करना है. And see guys, जो जो बातें आपको मैंने बताई हैं, ठीक है, सारी बातों को अप्लाई करो. कीवर्ड्स पर ध्यान दो. इन्वर्टेड पिरामिड वेयर यू गिव जनरल इंफॉर्मेशन फर्स्ट एंड डिटेल्स लेटर ऑन, उस पर ध्यान दो, है ना. देन फोकस ऑन पार्डन मी. देन फोकस ऑन जब पेयर बन जाते हैं एंड देन यू ब्रिंग द पेयर्स टुगेदर, नॉट लाइक द ओरिजिनल आपके क्वेश्चन के सेंटेंस जो थे. इन बातों का ध्यान रख के स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन. थोड़ा लेंदी है. I'll give you enough time, but you have to utilize that time. Okay.
ओके। एफ इज स्टार्टिंग और फर्स्ट वाला तो फिक्स है ना, तो फिर स्टार्टिंग मीन्स व्हाट? तो हियर वी कैन सी some keywords पहले मार्क करो मेरे साथ before I reveal the answer. As the 19th century progressed, the rate of changes became even faster. तो समय के साथ में changes भी होते गए. That's how our first line begins the para. It lessened the drudgery of man and life became easier. तो कुछ हुआ जिसके कारण लाइफ easier हो गई, resulting in increase in population. ध्यान में रखेंगे. Many of these discoveries, these means एक से ज़्यादा minimum 2 discoveries directly indirectly बताई गई होनी चाहिए, then only हम B को बोल सकते हैं. And लाइक द टेलीग्राफ एटसेट्रा ये सब चेंज करा, अभी भी चेंज की बात हो रही. साइंस प्रोड्यूस्ड वंडर आफ्टर वंडर, एक के बाद एक वंडर, एंडलेस पेजेंट ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज विच dazzled people's eyes. एक तो ये कॉमन है, डिस्कवरीज जनरल लिखा है, बी में मुझे एग्जाम्पल मिलते हैं, प्लस दीज डिस्कवरीज के को लेकर इंडिकेट करा गया है. तो आई हैव अ पक्का पेयर दैट इज सी एंड बी, है ना. अगेन बिकॉज हम डिस्कवरीज जनरल वे में बोल रहे हैं, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, एंड देन बी में वी आर सेइंग दीज डिस्कवरीज एंड इवन नेमिंग दोज, so that's why CB will come together. Science dared to measure the farthest heavens and also the invisible atom, its even smaller components. छोटे से बड़ा सब करा है साइंस ने, डी ये बोल रहा है ना. At the same time, science also evolved the most thoroughgoing methods of destruction. At the same time मतलब कि कुछ ऑलरेडी हो रहा है और साइंस ने डिस्ट्रक्शन के मेथड्स पर भी एक ग्रोथ हमको दी है. तो जो सी और बी की पॉजिटिव अच्छी अच्छी डिस्कवरीज और उनकी ग्रोथ है, उसके बाद ही मैं कहीं ना कहीं ई को बोलूंगी. A new era in communication started, where peoples of different nations started looking at one another with suspicion and distrust. ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव साथ में आएंगे, बाकी सारे पॉजिटिव हैं. तो यू नो कि ई एंड एफ लास्ट में आने हैं. सी बी का एक पेयर बना हुआ है. अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ए बोलता है, इट लेसन द drudgery ऑफ मैन एंड लाइफ बिकेम easier फॉर मिलियन. तो यू कैन सी डी में जो बात बोली है, साइंस डेयर टू मेजर द farthest heavens and even the smallest things. ये वाली जो डेयरिंग वाली बात थी, इन द सेंस दैट साइंस ने इट टुक स्टेप वन आफ्टर द अदर टू डू समथिंग अबाउट थिंग्स जो एग्जिस्ट करती हैं. So that's the case, D and A will come together. Okay. So finally जो आपका आंसर आता है, that is first and then C and B, because right now we are talking about change. So how science has changed. D and A talks, they both together talk about how far science has taken us, and A and F is giving us the scenario that not only in the positive direction but also negative में भी science ने हमको किस तरीके से, या फिर एक ऐसी चीजें जो कि डिस्ट्रॉय करती है उस जोन में भी कैसे लेकर गया है. वहाँ पे भी एक तरीके की प्रोग्रेस है, बट ऑफ कोर्स द आउटकम ऑफ दोस थिंग्स आर नॉट what we would want. तो इस तरीके से आंसर सी बी डी ए ई एफ. ओके, क्वार्टी के आई थिंक पेयर सही हुए, बस एक पेयर स्वैप हो गया. सी बी पहले आ जाता, डी ए बाद में आता तो वो सही हो जाता. सी बी डी ए. ओके ओके ओके. एनी डाउट इन दिस वन? कुछ पूछना है कोई पेयर को लेकर क्वेरी, कुछ ऐसा जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हो?
अभी इसमें फर्स्ट और लास्ट फिक्स्ड है, बस छोटा सा क्वेश्चन है, बीच के जितने क्वेश्चन है यू हैव टू अरेंज। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। वेरी क्विक हाँ। एक्सक्यूज, थोड़ा सा बेयर कर लेना, फिर से मैं दे रहा है प्रॉपर्ली, जस्ट बेयर विथ। Alcoholism is a major cause for concern. Okay, so if we see from here that alcoholism जो है वो कुछ है, and that is the major cause for, as it gives rise to many problems. Okay, ये क्या है, problems का पिटारा in a way, है ना? Prohibition will also lead to a decrease in tax revenue. So also क्यों आया? Prohibition को ही लेकर कुछ ना कुछ बोला जा रहा होगा। फर्स्ट के बाद ही सेकंड डी आएगा ना, इतना तो पक्का है, इमीडिएटली बाद में आ सकता है, थोड़ी दूर जाकर आ सकता है, वी विल वेट। However, whether prohibition is the solution is debatable. So we can see here, C बोलता है, C is in contrast and it says कि however prohibition जो है वो इसका आंसर है नहीं। Okay, we will keep it on hold. Gujarat has seen not only this revenue decrease, this revenue decrease means कहाँ पर revenue decrease है, ये है decrease, तभी तो this decrease बोला गया है। No doubt D and A and E will come together. Also, you will see D says many drinkers switch to drugs such as opium and cocaine. I mean, इधर पे बस switching हो रही है, अल्कोहल से दूसरे उस पे जा रहे हैं, है ना? So D है, AE है मेरे पास में, B है, and now if I see C, prohibition को लेकर जो बात B में बोल रहे हैं हम, कि first prohibition funds crime as demand for alcohol is met by criminals. तो prohibition के introduction को पहले हम दे देंगे B से पहले, तो C will take place before B. Okay, आंसर आपका बन जाता है CBDAE and then the seventh one. C is saying alcoholism cause of concern तो है, लेकिन however prohibition उसका solution है या नहीं, that is questionable. देन बी में वी टॉक अबाउट प्रोहिबिशन एक और काम कर रहा है, टैक्स रेवेन्यू पे भी हमको नुकसान पहुंचा रहा है। डी टॉक्स अबाउट सेकेंड थिंग दैट मैनी ड्रिंकर्स दे विल स्विच टू सिंपली समथिंग डिफरेंट जो उनको जो उनके वांट्स को पूरा करेगी, है ना?
and A and E will come together talking about कि यहाँ पर जो डिक्रीज टैक्स रेवेन्यू है वो कैसे हिट कर सकता है हमें. So that's why we have C, B, D, A, E. A will come first, okay? Not E. A will come first. क्योंकि फिर E में तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल है. गुजरात has seen not only this revenue, so definitely A के बाद ही E आएगा. अगेन फर्स्ट एंड सेवेंथ आपके लिए फिक्स करके दिए गए हैं. इसका फायदा लो. यू मे गेट जस्ट वन सेंटेंस दैट इज फिक्स्ड. यू मे गेट मोर देन वन सेंटेंसेस जो कि फिक्स्ड है. डिपेंड करता है व्हाट इज द पैटर्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है. A, D, E, B. Very good. Why did you change your answer? You were right the first time. It is clear that India needs to do a lot of homework in facing up to a potential Ebola outbreak. Okay, so we have to do a lot of things. And then we are telling what are the things that we are supposed to do. Firstly, the fact is that awareness is poor. Okay, but this is not that we have to do. This is simply जो exist करता है the fact. So A को कहीं थोड़ा context के साथ में डालना पड़ेगा. Indian medical fraternity can gain first-hand experience of the challenges faced in such a disease within a weak public health framework. So, okay, we will see where to put this again. We need more context. If some of 15,000
Indians living in the affected African region started coming back. Now this is what is our homework now. Potential क्या है कि अगर ये लोग आ गए तो फिर क्या होगा? The need of the hour is to ensure the wide dissemination of proper information. So awareness and dissemination of information. So these two will come together. A and D. हमें फैक्ट है कि अवेयरनेस पुअर है तो क्या करें? द नीड ऑफ द आर इज की डिसेमिनेट करो, फैलाओ और इंफॉर्मेशन को. तो ए एंड बी का एक पक्का पेयर हमारे पास मिल जाता है. फ्रॉम हियर द लार्ज इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी must step in and its talent must be utilized. Okay, so this is a suggestive tone कि ऐसा ऐसा होना चाहिए. Then what can fraternity do? Step in करने के बाद में, this is logic now. From E to B there is a flow of logic. कि जब हम बोल रहे हैं कि Indian medical fraternity must come, must step in, and we should utilize the talent. So in what way? अब कैसे करें? B gives you the further detail of utilizing their expertise. So we can of course say E and then B. And then what we are saying, this will also help generate goodwill for India and Africa. This is how we are ending 7th there, right? So C will be the first one after first, like technically second one. And then AB ka pair hum rakhenge because we are still talking about how we need to be aware and how we need to know about this outbreak, this disease. E and B mein we are introducing that there is a third party, there is someone, an organization, a fraternity that can help us. And how it will help us, वो हम B में बता के 7th पर जा रहे हैं. That's how your answer comes, C, A, D, E, B, and then the 7th one. Any doubt, any query in this one? On to the next one. Kindly make sure to like and share. Oh, I'm sorry. Wrong slide.
How that quick? चेक कर लो, कुछ सेकंड्स और हैं. FPDACE. So correct answer by Anjali, and I just got two answers. थोड़ा सा गलत हो गया quality, but I think you will be able to understand now. First is fixed, of course. Many American politicians and bureaucrats have strong links with the organizations and they back American intervention. So this is क्या चीज है, what exists, है ना? Then the MCI is delighted at his stance. तो मुझे किसी का नाम चाहिए before I use this his pronoun. Smith is known for his anti-abortionist stance. तो B है. Somewhere after B ही A आएगा. Doesn't mean immediately इसके बाद आ जाए. And he has held conventions in India on human rights violation and discrimination faced by Dalits. यहाँ पर contrast है. It says, but strangely he has blocked programs which empower Dalit. मतलब कि C के पहले तक, before C, he might be supporting them, and after C, he is blocking programs which empower Dalit women. So later on, the things are changing. It is now becoming clear that it is Christianity and not Dalit empowerment for women's rights for that Smith is lobbying for. तो C के साथ में ही E जो है वो आ जाएगा because it is again in the same tone about it is actually about something else and not about the women's right, है ना? तो C और E आ जाएगा. B जो है उसके कहीं ना कहीं बाद A आएगा. Right now we have just this much of the picture. There are a number of US and Indian-based Christian media networks operating in India. They work in unison with them. Okay, they और them जो है वो आपको यहाँ से मिल रहा है. So no doubt first के बाद में F है. And now from here we get to see in this context there is a person. उनके views, उनका क्या कहना है. So that's the B1. दलित organizations के बारे में and some power blocks in India naturally look up to him. This is also the positive. और ये positive है. Why they are looking up to him? क्यों ऐसा हो रहा है वो बात हम later on explain कर रहे हैं. तो B के साथ में D आएगा because उसमें उस person का introduction है. Smith क्या कर रहा है? Why he is popular? Why people are in his favor? So B and D में वो मिल रहा है मुझे. A में I'm getting to see that there is some kind of stance. C and E में the things are changing. So this is how the flow is. Automatically now you have the answer. It is F, B, D, A, C, E.
Okay, couple of seconds more. F तो सही है. F is the first one. Hmm. So the answer here is F, D, B, E, C, A. We have the correct answer here. So very good job, जिनका सही हुआ है. This attitude should change. So this attitude कौन सा attitude है? वहाँ पे आप ये लगा दो. This flawed process. इतने सारे this होने से बहुत है. To uphold standards, there is a need of a periodic review of the performance of the teacher. So ये किस context में क्यों बोला गया? Teachers की बात कहाँ से आ गई? Across India, teachers are more worried about finishing the syllabus than determining what students know and whether they can think for themselves. So there is a problem that is mentioned in C. And if I say this attitude should be changed because there is this attitude only, na? परी होना एक प्रकार का एटीट्यूड है, एक प्रकार का थिंग दैट गोज इन वंस माइंड है. तो सी एंड ए आर गोइंग टू कम टुगेदर. ओके. Then we get to see, but it should, okay, sorry, this flawed process contributes to the low standard. So there is a process. कौन सा process है ये? In India, the selection and appointment process for teachers is flawed. तो इसी चीज़ को आगे हम बढ़ा रहे हैं. F will definitely come with D, क्योंकि वो प्रोसेस क्यों फ्लॉड है, कैसे फ्लॉड है, वो सब बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके. But it should be measured not in terms of the pass percentage of students in an institution, but in terms of the level of knowledge the students possess. Now, E में जो बात है, that is about the how the things should be, है ना? So again, it has this suggestive tone. To uphold standards, there is a need for review of the performance of teachers. Teachers का performance किस पर दिखेगा? How do we know teacher का performance? Students के ऊपर दिखेगा, right? So, but it should be measured not in the terms of pass percentage of students. A teacher is a good teacher if 100% student pass हो जाते हैं. A teacher is not a good teacher अगर 80% होते हैं. तो author is saying, but it should not be in terms of this. So this but क्यों लगा है? How ये performance check हो रही है. So B and E are going to come together because of that line of thought, है ना? कि स्टैंडर्ड्स के लिए एक पीरियोडिक रिव्यू की ज़रूरत है, और रिव्यू जो होगा, एग्जामिनेशन जो होगा, वो मेजर ऐसे नहीं होना चाहिए, बट इन द टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ नॉलेज दैट स्टूडेंट्स possess, the spirit of inquiry they have imbibed. So how students are responding to the teaching of a teacher. तो इस वजह से B and E will come together. Now आपके पास जब तीन पेयर हो जाते हैं, F is the first one, so this pair automatically gives you the idea that first and second आपका क्या होगा. Now you can do one thing, you can put CA and then BE, or you can first use BE and then move to CA and see कि कहाँ flow जो है वो एक better paragraph दे रहा है, एक better clear idea दे रहा है. So you will find that if I say BE first and then we go to CA, across India teachers are more worried and this should change. This is like a more conclusive tone कि हम आखिरी में बात कर रहे हैं कि बदलाव ज़रूरी है. And that's why your answer will be FD, BE and CA. Okay. Next one.
There is one missing. E कहाँ गया अंजलि? Okay. Answer is start with B. देखो ना, बात से तो शुरू नहीं होगा. Introducing BT gene in brinjal is a small step towards ushering in other modified crops in country. Now, the introduction in brinjal is to protect something. So यहाँ the introduction क्यों बोला है? Already introduce करने की बात करी होगी तभी तो the introduction बोला है. Extensive research should be suggestive tone होना चाहिए. The effects should be studied. But the BT brinjal is a suite of transgenic brinjals created by or by this process. तो E में आपको कैसा है, यहाँ पे कैसे बनता है वो बताया गया. Details. The fruit borer menace of brinjal is not as alarming as bollworm in cotton. This too a BT crop. ये भी एक छोटी सी डिटेल है. तो B से शुरू करेंगे. That introducing BT gene is a small step. अभी ये स्टेप में क्या हो रहा है? In this step, it is a suite of transgenic brinjals created by ये स्टेप है. This is how ये जीन को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है. तो आप पहले बी में बता दोगे कि कर रहे हैं, फिर कैसे कर रहे हैं, ई में फिर जाएंगे. Now, why it is done? It is for the protection of the plant against pests. Okay, fruit borer menace. The fruit borer menace. ये कैसे पेस्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं, सी और एफ जो है वो उसको बता रहा है. एंड बिकॉज ऑफ इट ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे, है ना. एंड देन वी आर गोइंग इन कॉन्ट्रास्ट. व्हाई? बट द केस ऑफ ब्रिंजल इज डिफरेंट फ्रॉम कॉटन. अभी हमने बोला ना, इट इज नॉट एज अलार्मिंग एज द कॉटन वन. So because F में we have introduced a new topic, a comparison with
another cotton type, हम यहाँ पर बोल रहे हैं A and then D will come. That says that सबसे पहले तो पूरा रिसर्च वगैरह कर लो, उसके बाद में ही हमको ऐसा करना चाहिए, राइट? तो दिस इज द रीजन कि A और D जो है वो बाद में आएंगे. A में कॉन्ट्रास्ट है. First we are saying we want to do. First we are saying that there has to be this genetically modified crop जो exist होना चाहिए. A and D में A में contrast जा रहा है कि नहीं, फिर भी need to see, we still need to wait and watch. And D में how it should be done. So here you have all the positives and A B में suddenly एक contrasting point पर लेकर जाया जा रहा है. Is that clear to all of you?